So good evening future officers, welcome to EduTap and welcome to another important daily current affairs series session in which we are going to cover the important current affairs of 1st to 3rd of November 2025. So my dear friends, I hope that your preparations are really going well for upcoming phase 2 of the RBI Grade B officer examination and you are really giving proper focus on the revision as well. When it comes to these sessions, we conduct these sessions in the three important stages. That is, first we revise the important aspects of the previous session, because we all know that revision is one of the most important aspect for the current affairs, right? And that is why it is very important for us to do the revision. And apart from that, we basically cover the important news articles of the given timeline and then we move on to solve the MCQs. So basically in these sessions we cover the PIB. Along with that, there are some other important sources also, but the key major sources only PIB for these particular sessions. So now guys, if I'm audible and visible to all of you, please give me a thumbs up in the chat box so that we can start with the today's session, right? So my dear friends, I hope that yes, everything is clear and everything is fine with the today's session part, and we can move ahead with the today's part where we will be covering the important current affairs of 1st to 3rd November 2025. So this is the list of the topics that we are going to cover in the today's session. So you can see here that the first two topics are important for both phase 1 and phase 2 examination. The remaining ones are only important for your phase 1 exam. So why the first two articles are important for phase 1 and phase 2? Because they are directly related to your topics which are mentioned in the syllabus, right? So basically these particular things are important only for phase 1 and the phase 2. So I hope that this is clear to everyone. And now let's move ahead to the next part. So I'm just checking that your responses in the chat box, if everything is clear to all of you. So hello Jack and all other people who have joined us live today in this session, guys. So basically these are the topics that we are going to cover in the today's session. But before that, we have to ensure that whether we have revised the previous session or not. And that's why we will be having now a quick bite revision session for all of you, so that we can ensure that you have revised the previous part of the session as well. So let's start, and I will be waiting for your answers in the chat box. So make sure that you are giving me the answers in the chat box. So let's begin the quick bites of the last session. And here the first question is on a very important report, that is Global Multidimensional Poverty Index. The first question for all of you is that you have to tell me the name of the bodies which have released this particular report. What is the name of the body which has released this report? Quickly tell me in the chat box. So my dear friends, please give me the answer in the chat box that what exactly is the name of the body which has released the Multidimensional Poverty Index, a very important report for our examination point of view. And I'm just asking you the question on the very first basic dimension, because it is very, very important for us to ensure that we are well versed with all these dimensions of the reports, because they are not just important for the objective paper but also in the phase 2 descriptive paper as well. You can mention these reports in the descriptive writing to quote and to complement your answers with the valid data points, right? So what is the right answer here? So let me tell you that one name of the body is United Nations Development Program, UNDP. What is the name of other one? So the name of the other one is Oxford Poverty Human Development Initiative. Absolutely right. Oxford Poverty Human Development Initiative. So these are the two organizations which have together released this particular reports. So guys, I just want that all of you are answering the questions, right? So just watching the session, sitting relaxed, this is not the way to watch it. So we have to ensure that we are participating in the session, then only you will be having the good takeaways from the session. Okay, so make sure कीजिए कि आप participate करें सेशन के अंदर, तभी ये आपके लिए helpful साबित होगा. आगे बढ़ते हैं. The global MP is calculated by creating a deprivation profile covering 10 indicators related to dash. So basically I'm asking with you, from this question I'm asking you that what are the three dimensions of the Global Multidimensional Poverty Index? What are the three dimensions? I told you that your life will be hell if you are living in the multidimensional poverty. So what exactly health stands for? Health, education and standard of living, and the living standard. Absolutely, this is the right answer. These are the three dimensions. आगे बढ़ते हैं. Of 6.3 billion people in 109 countries, 18.3% live in the acute multidimensional poverty. But when it comes to the numbers, what exactly is the number of people who are living in multidimensional poverty? That is 1.1 billion people. Absolutely right. Next part. So about dash percentage of the children live in the multidimensional poverty more than twice adult rate.
सो दोस्तों हमने ये भी कवर किया था लास्ट सेशन के अंदर कि एडल्ट्स के कंपैरिजन में जो चिल्ड्रंस हैं उनका नंबर ट्वाइस है हु आर लिविंग इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द होल वर्ल्ड. एंड व्हाट इज दैट परसेंटेज? इट इज 27.8%. नाउ अगर हम बात करते हैं in the rural areas, we have seen that 54.9% of the population are living in the rural areas. But what exactly is the percentage of people who are multidimensionally poor and they are from the rural areas? So basically it comprises of what percentage? It's 83% of all the multidimensionally poor people are living in the rural areas. That is the right answer. Absolutely right. So guys, that's what I'm expecting from all of you, and now I'm really happy to see that all of you are giving me the answers. So well done Jack, Rahul, Padmini and all other people who have answered the questions correctly. Absolutely right. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. इन इंडिया की बात करते हैं तो पॉवर्टी रेट हमारा गिरा है फ्रॉम 55.1% to 16.4%. So now how many people India have lifted out of the poverty? This is what I am asking you now. What exactly is the number of people that we are able to brought out of the poverty in this particular period from 2005-6? What is the right answer? 2005-6 to 2019-2021. What is that number? It is 414 million people that we have moved out of the poverty. Absolutely right. Now moving to the next part. So the state mining readiness index. दोस्तों state mining readiness index कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है? कौन रिलीज करेगा इसको? व्हाट इज द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री विच इज देयर इन इंडिया which basically works for the mining sector? That is Ministry of Mines. Absolutely right. Now you have to tell me that what exactly are the toppers in the category A, category B and category C of the state mining readiness index. So basically this is an index which basically helps us to evaluate that how exactly the states are managing these mines, right, and how they are working for the development of these mines. So now you have to tell me that what is the different states which are on the top in the category A, B and C. We have discussed it in the previous session. What is the right answer? It is MGP. MGP. So in the category C it is Punjab. In the category A it is Goa. Now what is the name of the state which stands for M in the category A? That is what you have to tell me here. तो कैटेगरी सी के अंदर पंजाब है, कैटेगरी बी के अंदर गोवा है. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट विच इज देयर इन द कैटेगरी ए? यू विल बी टेलिंग मी हियर इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द राइट आंसर. एब्सोल्युटली राइट आकाश, इट इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर. वेल डन. आगे बढ़ते हैं मॉडल यूथ ग्राम सभा पर. सो इसको लॉन्च किया गया बाय डैश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डैश. सो दोस्तों हमने कवर किया था मॉडल यूथ ग्राम सभा में क्या करने वाले हम. वी विल बी मॉकिंग द ग्राम सभा. Right, we will be having a small group which will be performing the activities of a Gram Sabha in a school. They will be school students of the class 9 to 12, right? So what are the different ministries which are involved here? So here one is given Ministry of Education क्योंकि स्कूल के अंदर हो रहा है. अब अगर हम बात करते हैं पंचायत से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया के अंदर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. एंड द थर्ड वन, सो एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यहां पर हम जो हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है वहां पर भी इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा. सो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. सो ये तीनों मिनिस्ट्रीज इसका पार्ट होंगे. एंड एब्सोल्युटली आई कैन सी इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी हैज गिवन द राइट आंसर. वेल डन गाइस. आगे बढ़ते हैं. फीफा के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ फीफा एशियन कप टूर्नामेंट. सो यू हैव टू टेल मी दैट ये जो 47th एशियन समिट थी कहां हुई थी? व्हाट वाज द वेन्यू हियर? इट इज मलेशिया. Now the next statement, next question, Snow Leopard Day has been celebrated every year on which date? What is the date when we celebrate the Snow Leopard Day? It is 23rd October when we celebrate this day. Can anybody tell me the campaign which has been recently released where we are focusing on 23 minutes of the physical activity for the conservation of the snow leopards? What was that campaign? Quickly tell me in the chat box. Moving to the next question, bilateral naval exercise between India and Japan which was held recently, it is named as, what is the name of the exercise? It is JAMEX. JAMEX is the right answer. बिल्कुल सही जवाब. And yes, everybody has given the right answer to this question that I have already asked you. Well done guys. अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ. ठीक है, बिल्कुल सही ने सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली दिया है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेशन की तरफ, दैट इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क. सो दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हु बेसिकली लव्स टू एक्सप्लोर
the places, and apart from that, whenever you visit the different places, you always try the authentic food of that place, right? And when it comes to Lucknow, guys, so Lucknow is having really a very interesting cuisine, and this cuisine of Lucknow basically reflects the heritage of the city, right? So that's why let me tell you that Lucknow has been officially declared a UNESCO creative city of gastronomy. So दोस्तों ये gastronomy क्या है? Gastronomy is the art and science of good food, right? And the creative city. City creative कब होगा? जब वो अपने किसी भी particular sector को इस्तेमाल करेगा for the better livelihood of the people, for providing better opportunities to the people. And when it comes to Lucknow, that particular opportunity is in the food sector. And that is why Lucknow has been officially declared a UNESCO creative city of gastronomy. Why? Because when it comes to the creative city of gastronomy, which is basically declared by UNESCO, so this is basically given to those cities which are using their food as a part of the living for the people. So much of the livelihood is dependent on the food sector, right? Apart from that, with this, we just don't say that the food in the Lucknow is just tasty. It's not that. Yes, it is really tasty. But guys, let me tell you here that the food in Lucknow basically reflects the heritage, the hard work, and the creative part of the city which it has been using in order to provide the livelihood of the people. And that is why it has been given the UNESCO Creative City of Gastronomy during the 43rd session of UNESCO General Conference, which was held in Samarkand, Uzbekistan. So दोस्तों समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर लखनऊ को ये खिताब दिया गया. ठीक है. सो आप में से जो भी लखनऊ से हैं वो दे कैन डेफिनेटली टेल मी इन द चैट बॉक्स अबाउट दिस पार्ट एंड रियली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. और जिस जिसने लखनऊ गए हैं दोस्तों, यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द चैट बॉक्स, राइट. आगे बढ़ते हैं. लखनऊ का जो इंक्लूजन है सो ये किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे, जो हम हर साल 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. सो दिस ईयर to celebrate Lucknow's culinary traditions as a symbol of its cultural identity and to position Lucknow as the leading gastronomic destination globally. So this particular declaration has been made by UNESCO, where Lucknow has been given this Creative Cities Network. It has been added to the list of Creative Cities Network, right? So that's all from here. Let me tell you here that Lucknow has become the second city of the country to achieve this particular award. Can anybody tell me what is the name of another city? What is the name of another city? So let me give you a small hint that from that particular city there is a famous thing to eat, that is biryani. Absolutely right, it's Hyderabad. So काफी students ने एकदम सही guess किया यहाँ पर. So guys, let me tell you that Lucknow has become the second Indian city after Hyderabad, which was named in this list in 2019 to receive the gastronomy tag under UCCN. और लखनऊ ने ये प्लेस अर्न किया among the 70 creative cities of gastronomy worldwide, which includes, and now it has joined the likes of Hyderabad, Al Madina, Al Munawara, Kelowna of Canada, Guangzhou and Zaragoza, right? तो ये different areas हैं और including Hyderabad, और इस लिस्ट को अब लखनऊ ने भी ज्वाइन कर लिया है. बिल्कुल सही जवाब. So everybody has given the right answer. So guys, please let me tell you here that try to remember this part. If I ask you what is the name of that city in our country which has been given this particular UNESCO Creative City of Gastronomy tag, what is the name of that city which has been given this tag? It is Lucknow. On which occasion it was been given? It is World City Day. And on which date we celebrate World City Day? It is 31st October. Absolutely right. And can anybody tell me what is the name of the second city? What is the name of the first city which was India's first city to basically got this particular tag? That is Hyderabad. Absolutely right. So this manner we have basically revised each and everything which we are required to cover from examination point of view. Now let's move ahead into the key details of the UNESCO Creative Cities Network, that what exactly it is, so that we can cover the key important static portion of this particular news article. So it was established by UNESCO in 2004 to promote international cooperation among cities investing in culture and creativity. तो हमारी ग्रोथ के लिए कल्चर और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके हम सिटीज को और ज्यादा एनहांस करते हैं, उनकी इकोनॉमीज को बूस्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम फोकस करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर. सो ये ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए यूसीसीएन को एस्टैब्लिश किया गया. नाउ इट इंक्लूड्स 408 सिटीज अक्रॉस 100+ कंट्रीज. पहली बार यूसीसीएन ने आर्किटेक्चर को भी ऐड किया एज अ न्यू क्रिएटिव फील्ड इन एडिशन टू इट्स एग्जिस्टिंग 7 कैटेगरीज. सो 7 कैटेगरीज ऑलरेडी ही थी.
इसके साथ साथ आर्किटेक्चर को भी अब इन्होंने ऐड कर लिया है, ठीक है। विद लखनऊ इंक्लूजन, अब इंडिया की टोटल 9 सिटीज हैं इन द यूसीसीएन नेटवर्क। फॉर द डिफरेंट रीजंस वी आर हैविंग 9 सिटीज टोटल नाउ इंक्लूडिंग लखनऊ इन द यूसीसीएन नेटवर्क। सो ये कौन से 9 सिटीज हैं दोस्तों, ये भी आ सकता है पेपर में कि इसमें से कौन सा सिटी ऐसा है जो कि इसका पार्ट नहीं है, या फिर कौन कौन से सिटीज इसका पार्ट हैं, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So Saif Rahman, RBI Grade B Phase 1 result will be out and we will definitely post a video of the same, right? Don't worry. Right now, try to focus here on the session so that if you are appearing in the Phase 2 examination, you don't lose your important marks. Okay? So whenever the result will come, you will get to know about that. But if you will be losing the details of the session, and again it is important for other aspirants also, right? So make sure that we are not deviating from the session right now. So basically the 9 cities are Jaipur, Varanasi, Chennai, Mumbai, Hyderabad, Srinagar, Gwalior, कोझिकोड एंड लखनऊ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि लखनऊ और हैदराबाद जो है दोनों को गैस्ट्रोनॉमी के लिए मिला है, राइट। इसके अलावा वाराणसी और चेन्नई को म्यूजिक के लिए मिला है, इंक्लूडिंग ग्वालियर। कोझिकोड को लिटरेचर के लिए मिला है। तो हमें यहाँ पर इनकी डिफरेंट एरियाज भी याद रखने होंगे, लाइक जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए मिला 2015 के अंदर, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज रिमेंबर जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, ग्वालियर, कोझिकोड एंड लखनऊ, दीज आर द 9 सिटीज, ओके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमने पिछले आर्टिकल को अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो गोगाबिल लेक इन बिहार। सो गाइस, व्हाई एग्जैक्टली इट इज देयर इन द न्यूज? बिकॉज इट हैज बीन नाउ एडेड टू द रामसर वेटलैंड साइट। अब ये रामसर वेटलैंड साइट्स कौन सी हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा कि दोस्तों वेटलैंड क्या है। वेटलैंड इज दैट ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर where land meets water, right? And you can see here that this land is basically moreover wet in nature. Why so? Because for the complete year or for the some part of the year, the water is basically submerging this land. So इसको हम कहते हैं wetland, right? और wetlands की conservation के लिए हमने कन्वेंशन को साइन किया था जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। इसीलिए हम इसको कहते हैं रामसर वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स रामसर कन्वेंशन का पार्ट है तो उसे रामसर वेटलैंड कहा जाता है। एंड दिस डिक्लेरेशन, दिस टैग हैज बीन गिवन नाउ टू गोगाबिल लेक इन बिहार, which has been now designated as Ramsar site in November, raising India's total number of Ramsar wetlands to 94। तो टोटल नंबर याद करना बहुत जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स कितने इंडिया के अंदर, दैट इज 94। गोगाबिल लेक which is located in कटिहार district becomes बिहार 6th रामसर साइट। ये बिहार की 6ठी रामसर साइट बन चुकी है। एंड विद दिस अब एशिया के अंदर इंडिया फर्स्ट नंबर पर आता है इन द नंबर ऑफ रामसर साइट्स विच आर देयर, राइट। तो रामसर वेटलैंड्स में अब यहाँ पर इंडिया फर्स्ट नंबर पे इन द एशिया। थर्ड ग्लोबली है यूके के, आप देखेंगे 176 साइट्स है, मैक्सिको के 144 साइट्स है। तो ऑन द टॉप इट इज यूके, देन मैक्सिको एंड देन इट्स इंडिया, राइट। सो एशिया के अंदर इंडिया है बट ओवरऑल इंडिया थर्ड नंबर पर आता है, ठीक है। सो देयर आर 2546 राम साइट्स ग्लोबली अंडर द रामसर कन्वेंशन। अभी तक टोटल 2546 साइट्स हैं और बिहार यहां पर थर्ड नंबर पर आता है अमंग द इंडियन स्टेट्स आफ्टर तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर है रामसर साइट्स, राइट। उसके बाद आती है बिहार के अंदर। सो ये कुछ डिफरेंट डिटेल्स हैं दोस्तों जहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। सो वी हैव टू इंश्योर कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम करें सो दैट ऐसे क्वेश्चंस को मिस ना करें, ठीक है। सो बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है एंड इज मैनेज्ड बाय द लोकल कम्युनिटी ओनली। द लेक इज एन ऑक्सबो वेटलैंड। दोस्तों एक ऑक्सबो वेटलैंड क्या होता है? इट इज फाउंड बिटवीन गंगा एंड महानदा रिवर। सो गंगा और महानंदा रिवर के बीच में ये बनता है ऑक्सबो वेटलैंड। ऑक्सबो वेटलैंड क्या है दोस्तों, इसको भी हम कवर करेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट इट। When it comes to the Oxbow wetland, ये एक U-shaped lake है which is formed when a wide meander of the river is cut off, creating a free-standing body of water. So basically एक U-shaped form हो जाती है जब एक wide meander of a river is cut off और वो बनाता है एक free-standing body of water जिसको Oxbow lake कहा जाता है। और ये जो लेक है आपका गोगाबिल लेक, ये भी एक ऑक्सबो लेक है। सो अगेन थोड़ा सा डिटेल पार्ट है बट यस डेफिनेटली वी कैन सी इन द एग्जामिनेशन दिस कैन बी आस्क्ड, ओके।
So that's why we have covered this information in a beautiful manner, in the most comprehensive manner. If I ask you what is the name of that particular lake which has been recently added to the Ramsar wetland sites, what is the right answer? Quickly tell me in the chat box. It is Gogabil Lake. And in which state it is there? It is in the Indian state of Bihar. And with this addition of this, what is the total number of Ramsar wetland sites in our country now? It is 94. Absolutely right. ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीवियसली एडेड रामसर साइट्स की जो बिहार से इंक्लूड हुई हैं, दे आर गोकुल जलाशय ऑफ बक्सर डिस्ट्रिक्ट एंड उदयपुर झील ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो ये दो और ऐसी रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, रामसर साइट्स हैं जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, वी आर रिक्वायर्ड टू कवर अबाउट द रामसर कन्वेंशन ऑल्सो। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन क्या है दोस्तों? इट इज बेसिकली द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वो वेटलैंड जिनको हमने इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी डिक्लेयर किया एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कंजर्व देम। सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड रामसर वेटलैंड्स, राइट? सो दे आर कॉमनली नोन एज रामसर कन्वेंशन, नेम्ड आफ्टर रामसर व्हिच इज इन ईरान। अडॉप्ट कब किया गया था? 1971 में अडॉप्ट किया, 1975 में ये इंप्लीमेंट हुआ। इंडिया का रेटिफिकेशन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, February 1, 1982 के अंदर इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था। ऑब्जेक्टिव काफी सिंपल था, दैट वी वांट टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। तो जो हमारे वेटलैंड्स हैं और जो हमारे से रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज हमें करना चाहिए, इसीलिए रामसर वेटलैंड कन्वेंशन को साइन किया गया था। ठीक है, अब वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल February 2 को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। दैट इज द राइट पार्ट। अगर हम बात करते हैं पहली रामसर साइट की इंडिया की, तो 1981 में आई चिलिका लेक ऑफ ओडिशा और केवलादेव नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों ये दो हमारी पहली रामसर साइट्स हैं 1981 में जिनको असाइन किया गया था। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन, इसको कब अडॉप्ट किया? 1971 में। कब एग्जीक्यूट किया गया? 1975 में। रामसर किस सिटी के ऊपर है? ये कौन सी कंट्री की सिटी है? इट इज बेसिकली ऑफ ईरान, जहां पर इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ रामसर कन्वेंशन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। सो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या है? सो ये जो रामसर साइट्स हैं हमारी, इनका एक रजिस्टर बनता है और ये वो साइट्स हैं जहां पर वी आर बेसिकली वी कैन से दैट कि एक इकोलॉजिकल डिसबैलेंस वहां पर क्रिएट हो सकता है और इसीलिए इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन किया जाता है। तो वेयर द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैज चेंज और इज लाइकली टू चेंज, या चेंज हो चुका है या होने वाला है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, आपकी मेरी और हम सब की एक्टिविटीज की वजह से, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी एक इकोलॉजिकल कैरेक्टर उस प्लेस का, उस रामसर साइट का चेंज होने वाला है या हो चुका है, तो ऐसी जगह को हम इंक्लूड करते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो इंडिया की कौन सी साइट है इसके अंदर? दैट इज केवलादेव नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। 1990 से ये इसके अंदर है। कौन सी साइट्स को रिमूव कर दिया गया था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से? सो बेसिकली रिमूव होना एक साइट का वहां से एक अच्छी चीज है, बट अगर केवलादेव नेशनल पार्क अभी तक है, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इंडिया, राइट? सो चिलिका लेक ऑफ ओडिशा वाज लिस्टेड अर्लियर बट लेटर इट वाज रिमूव्ड सक्सेसफुल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। ठीक है, सो दोस्तों ऑक्सबो लेक के बारे में हमने ऑलरेडी कवर किया। गोगाबिल लेक एक ऑक्सबो लेक है। गोगाबिल लेक कहां का है? बिहार का है। बिहार से दो और रामसर साइट्स हैं, ये भी हमने कवर किए। इंडिया फर्स्ट नंबर पर आता है एशिया के अंदर आफ्टर यूके एंड मैक्सिको अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया थर्ड नंबर पे है और एशिया के अंदर इंडिया टॉप पर आता है। ठीक है, सो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। I hope this is clear, right? And you will be able to answer all the questions related to these areas. आगे बढ़ते हैं दोस्तों to the next important part, and you can see here to my left that a satellite is being launched. Let me tell you here there is some milestone which is attached to the satellite because it is the heaviest satellite which has ever been launched by India, and it is an indigenous satellite, right? That's why it is very important. You can see here geosynchronous satellite GSAT-7R has been recently launched. ये Indian Navy की most advanced communication satellite है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जो सैटेलाइट है कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी बाय द इंडियन नेवी। सो व्हाट नाउ कि इस सैटेलाइट से पहले कौन सा सैटेलाइट था जो कि ये कम्युनिकेशन का काम कर रहा था, एंड इट वाज द बैकबोन ऑफ द इंडियन नेवल कम्युनिकेशन। द राइट आंसर इज रुक्मिणी। सो दोस्तों हमारा जो रुक्मिणी है, सो GSAT-7R इज गोइंग टू रिप्लेस द एजिंग GSAT-7 Rukmini satellite which has been the backbone of naval communication since its launch in 2013. तो लास्ट 12 साल से this is the backbone of this particular part. ठीक है जी,
आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसकी तो इसको एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 नाम भी दिया गया है और ये अप्रोक्सीमेटली 4400 kg की है, विच मेक्स इट वन ऑफ द हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच हैज एवर बीन लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन सॉइल। इसको लॉन्च किया इसरो ने अलॉन्ग विद द इंडियन नेवी, लॉन्च यूजिंग द LV-M3M5 रॉकेट। LV-M3 रॉकेट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, इसको बाहुबली कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इतना भारी सैटेलाइट है, इसको स्पेस तक ले जाने के लिए बाहुबली जैसी स्ट्रेंथ हमें चाहिए, राइट। सो इसीलिए LV-M3 का नाम ही बाहुबली है, तो बाहुबली ही लेकर गया है इसे into the space, right? So that is the right answer. The name of the satellite is geosynchronous satellite GSAT-7R. The satellite is designed to provide robust and secure multi-band communication links. So I already told you कि communication के लिए काम करेगा ये. So it will be providing a backbone to the Indian naval communication, replacing Rukmini. GSAT-7 Rukmini को ये replace करेगा. The GSAT-7R, that is India's Navy's most advanced communication satellite which has been launched till now. Absolutely, this is the right answer and this is something that we need to understand here. Okay, I hope this is clear to everyone. The name of the satellite किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया along with Indian Navy. So ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको रिप्लेस करने वाला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, and this is one of the very important article guys which has really made the whole country proud as Indian women team has won their maiden World Cup one-day international title, right? So Indian women cricket team led by Harmanpreet Kaur under the captaincy of Harmanpreet Kaur won the first ever ICC Women's ODI World Cup title by defeating South Africa. तो दोस्तों साउथ अफ्रीका को हमने डिफीट किया by a margin of 52 runs and India won their first maiden ODI World Cup, and this is really a very big event and a cause of celebration for the whole nation, right? So अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस वर्ल्ड कप की, तो हमने पहले डिस्कस किया था कि इस वर्ल्ड कप को इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। द फाइनल वाज होस्टेड इन DY पाटिल स्टेडियम इन नवी मुंबई। सो किसके कैप्टनसी में इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीता? दैट इज हरमनप्रीत कौर। अगर हम बात करते हैं किस टीम को डिफीट किया, दैट इज साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका की जो कैप्टन है उनका क्या नाम है, कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स के अंदर। तो इंडियन की कैप्टन को सब जानते हैं, बट व्हाट अबाउट द साउथ अफ्रीका's कैप्टन? What is the name of the person who was the captain of South Africa? So you will be telling me that in the chat box. Now let's move ahead to the next part. अगर हम कुछ important details की बात करते हैं तो दोस्तों शेफाली वर्मा was the player of the match in the finals and दीप्ति शर्मा was the player of the tournament. तो player of the tournament दीप्ति शर्मा रही, शेफाली वर्मा was the player of the match of the final, and that is a really very important part to remember from exam point of view, because we have seen in the previous years that so many times these questions are being asked from the World Cup, right? So that's why we need to cover them. Apart from that, अब हम कुछ milestones की बात करेंगे। तो स्मृति मंदाना ने एक नया रिकॉर्ड बनाया for the most runs in a single women World Cup edition। तो 434 रन्स का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और सरपासिंग मिथाली राज रिकॉर्ड ऑफ 409 रन्स। वहीं शेफाली वर्मा की बात करें तो शेफाली वर्मा ने इंडियन ओपनर का फाइनल में जो स्कोर होता है उसका एक हाईएस्ट स्कोर बनाया, दैट इज 87 रन्स। अगर हम बात करते हैं दीप्ति शर्मा की दोस्तों, तो ये वाला रिकॉर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, बिकॉज वो पहली क्रिकेटर बन चुकी हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा रन स्कोर किए और 20+ विकेट्स लिए एक सिंगल वुमेन वर्ल्ड कप के अंदर। तो शी हैज स्कोर्ड 215 रन्स एंड टुक 22 विकेट्स, एंड दैट्स व्हाई शी वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट in this ODI World Cup title. Absolutely right. Now अगर इंडिया की टोटल की बात करते हैं, 298 runs was the second highest score ever in the Women's World Cup final behind Australia's 356 for 5 in 2022. और मंदना और शेफाली की 100 रन की जो स्टैंड था was the highest opening partnership for India in a Women's World Cup final, जो कि इस साल हुआ। And so this year you can see here that there are so many milestones which we have seen. So दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस वर्ल्ड कप कि सबसे ज्यादा विकेट्स ली किसने? वी हैव सीन द नेम ऑफ द पर्सन, दीप्ति शर्मा, राइट? कैन एनीबडी टेल मी सबसे ज्यादा रन्स किसने स्कोर किए हैं? हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप इवेंट? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? सो द नेम ऑफ द पर्सन इज द सेम दैट आई ऑलरेडी आस्क्ड यू, दैट इज द साउथ अफ्रीकन कैप्टन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? बुलवाट, right? बिल्कुल सही, I can see here. So Prakriti has given the right answer in this chat box. Laura Bulwart is the right answer. Absolutely right. So you should also know about that. Okay. So this is all the detail that we need to see. So India has defeated South Africa in the finals, which was happened in DY Patil Stadium. The World Cup was hosted by India and Sri Lanka. India defeated South Africa by 52 runs.
under the captaincy of Harmanpreet Kaur. The South African captain is Laura Woolward, right? अगर हम बात करते हैं player of the match की, that was Shefali Verma. Player of the tournament was Deepti Sharma. So these are the most important things. The most number of wickets taken by Deepti Sharma. और ऐसा पहली बार ये she became the first cricketer जिन्होंने एक सिंगल वर्ल्ड कप इवेंट के अंदर इन्होंने 200 से ज्यादा रन स्कोर किया और 22 विकेट्स लिए हैं, राइट? 20 प्लस विकेट्स. So basically this is really a very huge duplet which it has basically achieved, and it is record for the entire cricketing history, right? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ. तो एक जनरेशनल बैन टोबैको के ऊपर यहां पर लगाया है मालदीव्स ने. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आर्टिकल दोस्तों, क्योंकि मालदीव्स ने लगाया है बैन ऑन द सेल एंड यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स. आप देख सकते हैं दोस्तों का, आप सभी जानते होंगे क्या है ये, राइट? सो टोबैको प्रोडक्ट्स की सेल और उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई है मालदीव्स गवर्नमेंट ने. अब किसके लिए लगाई है ये बहुत जरूरी है. ऑल द पीपल who born after January 1, 2007, including the tourists. So even if you are someone who born after 2007 and you are the tourist and you are going to Maldives, you cannot have this. Although I really believe that you already are not having this, right? So this is something that we need to see here. अगर हम बात करते हैं इस रूल की, तो ये जो लेजिस्लेशन है कब से स्टार्ट होगी? 1 नवंबर 2025 से इसको शुरू किया गया, which prohibits the sale and use of tobacco products. और ये जो बैन है दोस्तों, ये वेपिंग और ई सिगरेट्स के ऊपर भी लागू होता है फॉर ऑल द एजेस, with heavy fines and violations for the people who will be violating this rule in Maldives. Absolutely, this is the right answer. So what is the name of the country which has banned the usage of sale as well as the usage of the tobacco products for all the people who are born after 1st January 2007, even including the tourists? The name of that particular country is Maldives. आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट स्टेट फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी. सो गाइज, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेट? इट इज केरला. सो केरला हम सभी जानते हैं, हमने जब आरबीआई की मैराथन कर रहे थे तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हमने देखे विच आर रिलेटेड टू केरला ओनली, राइट? सो केरला हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट पॉवर्टी फ्री स्टेट. सो recently on 1st of November, the Chief Minister of Kerala has announced that Kerala has become the first state of the country which is free from extreme poverty. दोस्तों extreme poverty का मतलब क्या है? Extreme poverty का मतलब है basically those people who are living under such kind of situation that they are not even able to afford the basic human needs such as food, shelter, healthcare, education and clothing. तो जिनको ये facilities भी जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, these are the people who are living in the extreme poverty. And now Kerala has become extreme poverty free state and it become the first Indian state to be extreme poverty free state, right? अगर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखें तो वो पर्सन जो $2.15 पर पर्सन पर डे की अमाउंट को से भी कम अमाउंट यूज कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अंडर द एक्सट्रीम फ्री पॉवर्टी. एब्सोल्युटली राइट. सो दोस्तों, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है दैट केरला हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट, और साथ ही साथ अगर हम पूरे रीजन की बात करते हैं तो केरला ऐसा सेकेंड रीजन बन चुका है वर्ल्ड के अंदर, राइट? सो इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टू अचीव दिस माइलस्टोन. तो सबसे पहला रीजन था चाइना, उसके बाद अब केरला ये बन चुका है सेकेंड रीजन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. So with this, we are done with all the important news articles of the today's session, right? So we have done some very important articles for 1st to 3rd of November 2025. And now it's a time for all of you to make sure that you are giving me the answers in the chat box to all the questions that I am going to ask you here, because solving the MCQs is really very important from the examination point of view, okay? So let's start the MCQs part. And here is the first question. The first question is on the Gogabi Lake and its recent designation as a Ramsar site. So what you have to do, you have to go through these statements, try to identify the right answer. सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है दोस्तों, सेंट्रल टॉपिक आइडेंटिफाई करना है. What is the central topic? Gogabi Lake, जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया. Second thing is, what is the demand of question? Demand of question क्या है? हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. थर्ड स्टेटमेंट इज वी नीड टू एनालाइज द कीवर्ड्स. तो अब थर्ड पार्ट पर आते हैं दोस्तों. तो पहला स्टेटमेंट गोगाबी लेक कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, बिल्कुल सही. डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट, मेकिंग इट बिहार 6th रामसर साइट. सेकंड स्टेटमेंट, इंक्लूजन ऑफ गोगाबी लेक इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली आफ्टर द यूनाइटेड किंगडम. तो दोस्तों हमने कवर किया था कि यूनाइटेड किंगडम के बाद तो आई थिंक मैक्सिको था, राइट? तो इंडिया तो 3rd नंबर पे था, एशिया में इंडिया टॉप पे था. तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट.
Gogabin Lake is Bihar's first community reserve and is an oxbow wetland formed between the Ganga and Mahananda river. देखिए दोस्तों, रिवर का नाम भी याद होना चाहिए. कभी कभी वो आपसे रिवर का नाम पूछ लेते हैं और वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, सो मेक श्योर कीजिए कि आप इन सभी चीजों को याद रखें. यहां पर क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3. Statement 1 and 3 are absolutely right. Statement 2 is incorrect, and that is why. And we have already discussed the detail that why statement 2 is incorrect here. So I can see in the chat box. So Niharika, Akashdeep, Prakriti, all of them have given the right answer to this question. Well done. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So which of the following statements regarding UNESCO Creative Cities Network is and identify the incorrect ones. So दोस्तों यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू यूसीसीएन. तो शुरू करते हैं. पहला स्टेटमेंट, लखनऊ को डेजिग्नेट किया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, बिल्कुल सही है. और ये 43rd सेशन के दौरान किया गया जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ. एब्सोल्युटली राइट. सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं. लखनऊ इज द थर्ड इंडियन सिटी आफ्टर हैदराबाद. इज इट द थर्ड इंडियन सिटी? नो, इट इज द सेकंड इंडियन सिटी. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Third statement, inclusion of Lucknow in UCCN was announced on the World Cities Day, जो कि 31st October को celebrate होता है. This is absolutely right. So first statement is right, third is right, second is wrong. So what will be the right answer? Right answer will be option C, that is 2 only, क्योंकि हमें identify क्या करना था? Incorrect statements को. बिल्कुल सही, everybody has given the right answer. आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पार्ट की तरफ. So which Indian state has recently been declared as the country's first poverty free state? तो इंडिया की पहली पॉवर्टी फ्री स्टेट कौन सी है? इट इज केरला. सो ऑप्शन सी अगेन इज द राइट आंसर. सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हैविंग अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एवरीबॉडी ऑफ यू विल बी आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो हियर इज द होमवर्क क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ऑन द ICC Women's ODI World Cup and you have to identify the correct statements here. There is a set of 5 statements, so nothing is difficult here. बहुत ही easy statements हैं, उसी लाइन पर हैं जो हमने आज के सेशन में डिस्कस की है. तो दोस्तों जो भी हम यहाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं वो सेशन के अंदर जो डिटेल को हमने डिस्कस किया उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं. ठीक है, तो ज्यादा कोई मेहनत वाला काम नहीं है. ठीक है, आसान सा काम है. बस एक बार इस सेशन को रिवाइज करना है और इस क्वेश्चन को ऊपर वापस आके इसको आंसर करना है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डालना है. ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा वो होगा हमारे आज के सेशन का स्टार परफॉर्मर. तो क्या आप स्टार परफॉर्मर बनना चाहते हैं और आप ये भी सोच रहे हो कि सर हमने तो रिप्लाई किया था, हमने तो कमेंट किया था आंसर, तो क्या हम स्टार परफॉर्मर है या नहीं? अभी बताते हैं. सो दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन हमने दिया था आपको लास्ट टाइम ऑन द इंट्रोस्पेक्शन ऑफ क्लाइमेट हजार्ड्स एंड पॉवर्टी ऑन द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025. यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली. एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ स्टार परफॉर्मर्स. यू कैन सी हियर दैट हरीश, अदीबा, विद्या, प्रणति, अधिरुब, सौरभ, अनामिका, आकाशदीप, these are the star performers from the previous session. दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी यहाँ पर आए एज अ स्टार परफॉर्मर तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दें. और दोस्तों यही था आज के सेशन का हमारा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यूज. अब आपको क्या करना है, आपको इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा टू रिवाइज इट. और ये पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो लिंक पर क्लिक करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है. अभी नहीं मिलेगा पीडीएफ, कल तक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन गाइस एंड आई होप दैट आज का सेशन भी आप सभी को पसंद आया होगा. तो काफी स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर फाइनेंस 360 सेशन नहीं हो रहा है. सो आई टोल्ड यू बेसिकली इन द मॉर्निंग इटसेल्फ दैट every week we will be having one session now for the finance 360 session because Kritika ma'am is basically involved in other professional commitments, so अभी उनके बाकी के sessions चल रहे हैं, so she is not able to take the sessions right now, but very soon she will be back with the sessions of the finance 360, right? So till that time you have to bear me for the same. Okay, so guys that was all from the today's session, and apart from that there are so many students who are waiting for the RBI results. Guys please don't wait, this is the golden period. मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि अगर ये टाइम चला गया दोस्तों तो ये एक ऐसा टाइम है जो दोबारा वापस आपके पास नहीं आने वाला. तो जो स्टूडेंट्स वेट करते रहेंगे अभी रिजल्ट का, लेट मी टेल यू, कहीं ये जो इंतजार है ये 1 साल लंबा ना हो जाए. तो इंश्योर कीजिए कि इंतजार ना करें और आज ही अपनी तैयारी को शुरू करें. देखिए जो रिजल्ट है वो जब आना होगा वो तब आएगा. इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, राइट? बट व्हाट इज इन आवर हैंड? इन आवर हैंड्स इट इज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. क्योंकि आप देख सकते हैं टुडे इज 8th of November, ऑलमोस्ट 29 डेज बचे हैं आपके फेज 2 के एग्जाम के लिए.
अभी तक अगर आपने कुछ दिन वेट करने में निकाल दिए दोस्तों, मेक श्योर कीजिए कि बाकी के जो दिन है उनको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आई नो दैट इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर यू राइट नाउ कि बिना रिजल्ट के वो पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आता, बट हमें मोटिवेटेड रहना है। वी हैव टू, बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर वी हैव टू थिंक लाइक एन ऑफिसर। जस्ट सोचो कि अगर आप अभी आरबीआई के ऑफिसर होते तो आप अभी क्या करते, ठीक है। जस्ट आस्क योरसेल्फ एंड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दोस्तों दैट वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन। अब आपको कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर, और कॉल कर सकते हैं आप 8146207241 पे, राइट। सो गाइस नाउ आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग।